Namaskar and a very good morning. Welcome to the audiocast from Kotak Securities. I'm your host and guide, Anindya Bannerjee. Our Asian equity markets are in a sea of red. और फ्राइडे को यूएस स्टॉक मार्केट्स क्लोज डीप इन द रेड एज वेल. तो ये जो एक रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर द इंडियन रूपी. बट इट्स जस्ट नॉट अबाउट द स्टॉक मार्केट. If you look at oil prices, that's very interesting. Oil is trading on Brent close to $89. But the oil prices are not responding to this global sell-off in equity. Generally, जब equity में heavy sell-off होता है, and because of growth concern, risk of sentiments, and industrial commodity like oil falls. And also the bond yields fall as well because of safe haven demand. The US bond yields में decline तो है, but oil prices are rising. क्योंकि ये क्यों हो रहा है इज बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम. एक तरफ मिडल ईस्ट, दूसरी तरफ रशिया, टू मेजर हब्स फॉर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन. मिडल ईस्ट में फ्रेश रिपोर्ट्स आर कमिंग ऑफ अ पॉसिबल टेररिस्ट अटैक इन UAE. नाउ दिस इज अनकन्फर्म्ड, बट at the same time there is a tension flaring up in Iran as well over the nuclear deal. तो इससे कारण it's making Middle East sort of simmer. And because of the simmering, it is adding to the risk premium in oil prices. Russia इसके लिए important है क्योंकि यूक्रेनियन जो border है उसमें Russian military forces are building up their strength. And NATO is complaining that there could be a possible invasion from Russia. इसके लिए NATO is urging its members to also take countermeasures. So because of this, the oil prices are being bid. This combination की एक तरफ equity sell-off, दूसरे तरफ you have a higher oil prices is a pretty bad combination for the Indian rupee. But interestingly, dollar rupee or Indian rupee has been extremely resilient. और इसके पीछे जो कारण है we have been highlighting is that the corporate dollar inflows is extremely strong. It is so strong that it is overwhelming a little bit of FPI outflows जो हो रहा है from the equity market. और कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग तो कुछ खास है नहीं, तो इसके कारण नेट डॉलर रुपीज ड्रिफ्टिंग डाउन. बट लोअर लेवल्स में RBI इंटरवेंशन वी एक्सपेक्ट टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग, एंड दिस अप ट्रेंड इन द FX रिजर्व इज एन इंडिकेशन ऑफ दैट. तो द हाउ टू नाउ ट्रेड दिस एटलीस्ट फॉर टुडे, बिकॉज वी हैव टू टेक डॉलर रुपी ऑन अ डे टू डे बेसिस, बिकॉज कुछ खास मोमेंटम तो मार्केट में नहीं है. ये अचानक एक दो दिन फ्लेयर अप करता है, फिर 3-4 दिन इट स्टार्ट्स टू ड्रिफ्ट डाउन. तो आज का जो ग्लोबल माहौल देख के लग रहा है कि बाइंग आना चाहिए एट लोअर लेवल. सो 74.30 के नीचे स्टॉप देके ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस जैन फ्यूचर्स में वन कैन बाय द डिप एंड प्ले फॉर मूव टूवर्ड 74.60. अगर उसके ऊपर भी एक्सटेंड हुआ तो 75-80 की तरफ जा सकता है. बट 74.30 के नीचे स्टॉप होना इंपॉर्टेंट है ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस. सो बाय ऑन डिप्स यूजिंग फ्यूचर्स. दूसरा ये हो सकता है कि यू कैन बाय एट द मनी कॉल, नॉट आउट ऑफ मनी, क्योंकि अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है फॉर यू टू बाय एन आउट ऑफ मनी कॉल. सो यू कैन बाय एट द मनी कॉल, बट स्टॉप लॉस विल बी डिफाइंड एज पर 74.30 on the Jan futures. Writing a put option can also be done. These three trades are in the same direction, that is an upward move in dollar rupee. Now, on the crosses, this week important है because this week 2 sets of data is going to be out. Majorly economic data or economic event. एक है कि the flash PMIs from Europe, which is going to impact Euro INR and GBP INR. Flash PMIs for the month of Jan. दूसरा है कि US Federal Reserve meeting, which is the most important event, which is on Wednesday. Now, ये Federal Reserve meeting में Fed is not expected to make any changes in the interest rate because the first interest rate hike from Fed is expected to be around March. But ये meeting में the market is going to focus on the Fed's language because now the money market has priced in at least 4 interest rate hikes. Some are even calling for 6. So which means the language has to be extremely hawkish, no room for any dovishness. तो इसके लिए डॉलर इंडेक्स और ओवरऑल डॉलर के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है आफ्टर द फेड मीटिंग. So this is one big event to keep an eye on. So that's it, folks. This is Anindya Bannerjee signing off. Have a fantastic day ahead.